Hello everyone, welcome back to my channel All Sorted. Today's video is going to be special. It's going to be very informative, especially if you are an MBA HR aspirant, somebody who's exploring what the HR field is all about. HR में कौन से role होते हैं, HR exactly क्या करता है. HR is human resources, right? So many of you might be having the questions and you want to be clear before doing an MBA in HR. This will help you. If you are wondering HR में कौन से roles, क्या चीज़ होते हैं, क्या handle करते हैं organization में HR, this will help you. And in general, if you want to know कि यार HR करता क्या है, if you are into sales or any other thing, but it's good to know information for all of you. So I will make this video from my understanding, from a story point of view, because I also meet my friends. So अभी ऐसा हुआ था, I met my friends, they were like, यार तुम्हारा exact काम क्या रहता है, हमें अभी भी नहीं पता. So although they are working in organizations, they are still not aware what an HR executive does. Many of the people feel यार HR तो hiring करता है, interview लेता है, और क्या करता है HR, है ना. हमको उतना पता है, HR राउंड होता है, जब आप कंपनी में सिलेक्शन के लिए जाते हो तो फाइनल राउंड HR होता है, और क्या करता है, इसके अलावा क्या होता है. आई रिक्वेस्ट इज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज एट द एंड आई एम गोइंग टू रिवील मोर इन्फॉर्मेशन दैट यू विल नेवर फॉरगेट. My only request is you subscribe to the channel and like the video if you find this video informative and want me to make more such videos. Please like, please subscribe, it helps me a lot. So I hope you can see मैंने ब्लैक यहाँ पर सब कुछ उतार दिया है according to my experience. So I am an alumni of TISS Mumbai HRM and LR, and so I was selected in IIMs, NEET, SIBM, IFT. I am Lucknow, TISS Mumbai HRM, and I chose HRM over others. So I had the knowledge because I had work experience before कि HR करता क्या है. I had met a lot of people to counsel, to understand before making this choice, and now I am almost 3 years into the HR field, so I'll make the video through my lens, my understanding also, so it's going to be practical. Okay, so we'll try to understand this from the whole employee cycle of Rahul. So from joining to exit. Okay, I hope you can see again what till the time of exit. Now in this whole life cycle, how HR plays a role in each of the employee cycle touch point. I will explain it through that. Suppose Rahul एक fresher है, engineering grad है, just did his BTech, his engineering, and now he's looking for a job. आगे क्या होता है अभी Rahul, how does Rahul decide whether he wants to sit for Infosys, Wipro, Microsoft, Google. ये सब सुन के उसके मन में क्या आता है. So if I ask you what do you hear, what do you think when it comes to applying for Google? Google में काम कैसा होगा, Microsoft में कैसा होगा, versus Infosys में कैसा होगा, TCS में कैसा होगा, HUL में, FMCG में कैसा होगा. So there is some story coming in your mind कि Google में लाइफ ऐसी है, perks ऐसे है, फ्री खाना है, कल्चर मस्त है, इनोवेशन है, ये है वो है, राइट. सो ये जो स्टोरी आपके दिमाग में आ रहा है when you hear about an organization, that is because of employer branding. Okay, employer branding is branding of the organization basically. So branding is all about recall story, how you form images when you hear the name of that organization, right? When I tell you about Mountain Dew, thumbs up, वो डर के आगे जीते and all, so that is branding, that is the recall value. So what do you understand about the organization is through the employer branding. Now who does the employer branding? ठीक है, ये मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है, employer branding. राहुल के मन में एक अच्छी इमेज आनी चाहिए about the organization that he is going for. अच्छे रिव्यूज आने चाहिए, लोगों से अच्छी बातें उसने सुननी चाहिए, तब जाके ही विल बी कीन टू अप्लाई फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, एंड HR प्लेज अ रोल इन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग. सो अभी तक ज्वाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं हुआ है. एक एम्प्लॉय ब्रांड मतलब एम्प्लॉय को ब्रांड करने के लिए HR डज द एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, डज द EVP, एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन. ओके, सो दिस इज द प्रोपोजिशन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुमने क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, ये आपके दिमाग में बैठ जाने के लिए एम्प्लॉय ब्रांडिंग का काम HR के अंदर आता है. सो इस फील्ड में HR और मार्केटिंग कंबाइन हो जाते हैं, एंड एम्प्लॉय ब्रांडिंग इज अ पार्ट ऑफ HR. सो दैट इज द फर्स्ट रोल. So let's look deeper at employer branding, what it stands and what it covers. So let's look at some research. It helps in attracting candidates. 75% of candidates, research about the firm's reputation. 83% say that employer brand plays a significant role to hire, and 69% candidates would not accept to join a firm if it has a bad reputation. आप भी कोई join नहीं करोगे firm अगर आप दोस्तों से सुनते हो कि नहीं भाई टॉक्सिक कल्चर है, मत कर ऐसा वैसा. सो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जो स्टोरी होती है वो बहुत हेल्प करती है टू अट्रैक्ट द राइट कैंडिडेट्स फॉर द राइट जॉब. नाउ लेट्स सी why is employer branding important. Again, attracts new talent and boosts retention. नए लोग आते हैं, it reduces the recruitment cost, ज़्यादा cost नहीं करना पड़ता है, and employee engagement भी बढ़ता है अगर employer brand आपका तगड़ा है तो. So key benefits again, attracts top talent, हमको top talent चाहिए. Employee retain होते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक टिकते हैं. Employee engage रहता है, belonging होता है, and company culture बहुत सही होता है, value करते हैं.
So key benefits, again, the employee value proposition, what is it? EVP is it, total pay क्या है, benefits क्या offer होता है, well-being कैसा है कंपनी में, career development, culture belonging, ये सब employee को पता होना चाहिए, which forms the employee value proposition. What is it for the employee? Employee brand is, how do employees like the brand, the company does it through reviews, through online presence, career page पे, LinkedIn पे होगा, candidate experience का feedback timeline सब कुछ share होगा LinkedIn पे, कंपनी का brand होगा, फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स बताएंगे. सो इस तरीके से ग्रेट ईवीपी बनता है, सो विच हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग टैलेंट, रिड्यूसिंग हायरिंग कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट. सो दीज आर ऑल EVP, and it should be unique, it should be differentiated, it should be competitive, it should be emotional and very well defined for your organization. So some results say it decreases annual turnover by 70% and commitment is increased by 30%. That's सो 5 की कंपोनेंट्स वुड बी रिवॉर्ड्स कैसे है, वर्क कैसा है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है ओवरऑल, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं, करियर ग्रोथ, पीपल, लोग कैसे, एग्जीक्यूटिव्स कैसा, कंपनी कल्चर है, ये सब ईवीपी बनाता है आपका. Organizations that effectively deliver on their EVP can decrease annual employee turnover by 69%. गार्टनर का स्टडी था. सो अगर आप टोटल देखोगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एवरीथिंग forms your EVP, employee value proposition. It's very important. So it's basically what's in it for the employees. मेरे लिए क्या है भाई, मैं क्यों ज्वाइन करूँ आपका फर्म, क्योंकि कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स, करियर, वर्क एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सब आप दिखाओगे तो मैं ज्वाइन करूंगा. तो एम्प्लॉय ब्रांडिंग की वजह से पता चल गया कि कंपनी एक्स इज लाइक दिस एंड ही इज कीन टू अप्लाई बिकॉज ऑफ द इमेज, द ब्रांड दैट हैज फॉर्म्ड, एंड एचआर हैज वर्कड ऑन दैट एम्प्लॉय ब्रांडिंग. बैक एंड से वो उन्होंने बहुत जगह एडवर्टाइज किया है, लिंक्डइन पे सर्टन इमेज बनाई है, रिव्यूज है, वैसे टाइप की मार्केटिंग हुई है कंपनी के बारे में, कॉलेजेस में जाके सर्टन टॉक्स हुआ है. सो ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय ब्रांडिंग. नेक्स्ट स्टेप इज राहुल नाउ वांट्स इज कीन टू जॉइन कंपनी एक्स and he wants to apply. How अभी कैसे कौन करेगा उस how to get selected? So that comes under recruitment and selection. So recruitment and selection process में क्या होगा, राहुल naukri.com पे अपना CV डालेगा, राइट, फिर राहुल वेट करेगा उसको HR का कॉल आए. सो इस प्रोसेस को पूरा हम बोल सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ द रेज्यूमे होता है, सीवी में उसने क्या क्या लिखा है उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट आएगा. अगर वो डेजिग्नेशन जेडी से मैच हो रहा है, इफ दे आर इंटरेस्टेड एंड द क्वालिफिकेशंस आर फिटिंग एज पर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ही इज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू के पहले एक प्री ज्वाइनिंग टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हैं, इसमें इंग्लिश, क्वांट, वर्बल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन. वो होने के बाद इंटरव्यू होता है, टेक्निकल राउंड. सपोज राहुल इज अप्लाइंग फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब बिकॉज ही इज इंजीनियरिंग CS ग्रेजुएट, सपोज, और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट. ना उसके लिए टेक्निकल राउंड होगा एंड देन HR सिलेक्शन राउंड होगा. सो दिस ऑल कम्स अंडर TA team, talent acquisition team under HR. So talent acquisition is one of the functions that does all the recruitment and selection. And Rahul is coming in the organization due to this department. The HR will go to the college, they will take the test, and then Rahul is sitting for that. Suppose Rahul is joining from campus, in that case फिर उसको कॉल आएगा, ऑफर लेटर रिलीज होगा, राहुल हैज टू एक्सेप्ट दैट ऑफर लेटर एंड देन एक ज्वाइनिंग डेट मिलेगा. सो ऑल दिस इज टेकन केयर बाय द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टीम. ओके, इनका काम होता है कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन में आए, जो कि अच्छा कल्चर में हमारे फिट होते हैं एंड केपेबल इनफ है. सो दीज पीपल आर सिलेक्टेड एंड दिस इज डन बाय द टैलेंट एक्विजिशन टीम अंडर एंड डज द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. So what are types of talent acquisition strategy? It can be first like build मतलब अंदर इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, अंदर से ही लोग तैयार करो, बिल्ड करो. सेकेंड इज बाय, acquire experienced talent from outside. थर्ड इज ब्रिज, यूज लर्निंग प्रोग्राम्स टू एनहांस एम्प्लॉय स्किल्स ताकि वो फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर हो जाए. एंड फोर्थ इज बोरो, एंगेज पार्ट टाइम फ्रीलांस पीपल, लाइक इट कैन बी गिग वर्कफोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी. 4 टाइप के हम लोग कर सकते हैं, या तो बिल्ड कर सकते हैं, या तो खरीद सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं, हायर, आइदर वी कैन ब्रिज और वी कैन बोरो पीपल. सो दीज आर द 4 टाइप्स. देन व्हाट्स इन्वॉल्व्ड इन टैलेंट एक्विजिशन इज hiring planning, development or recruitment strategy for the year, recruitment marketing, employer branding also comes. There's talent assessment tools, performing talent analytics, using a lot of data, onboarding, pre-onboarding. Then there's succession planning, who will lead the roles when one person goes. So some process, some steps are like, first you develop the strategy, then update the talent pipeline, लीड जनरेशन, देन रिक्रूटमेंट में जाता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर रेफरेंसेस से इवैल्यूएशन करा सकते हैं, देन कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं. सो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में
टाइम लगता है, देन आपको लगता होगा इतना टाइम क्यों ले रहे, राइट? सो हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग होता है एंड देन सक्सेशन प्लानिंग, कौन से रोल में कौन जाएगा लेटर, राइट? Talent acquisition versus recruitment. Talent acquisition is actually more strategic. Recruitment is tactical and short term. Talent acquisition tailors, the recruiting steps to specifically meet companies' ka vision. So it's a long-term process. And recruitment is, filling existing openings as quickly as possible. So very much number driven. And so difference kya hai? Basically, talent acquisition is a holistic approach to attracting the top talent, major top talent, and recruiting involves filling the vacancies which are right now and new job openings, posting them. So this is the different, अगर आपको कोई पूछता है तो ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 3. अभी राहुल हैज़ ज्वाइनिंग मिल गया है सपोज जुलाई में. ओके, सो राहुल इज ज्वाइनिंग द फर्म इन जुलाई 15th. अभी कुछ प्री ज्वाइनिंग चीज़ें होंगी जो राहुल को करनी पड़ेंगी, एंड पोस्ट ज्वाइनिंग उसका इंडक्शन होगा कंपनी के बारे में. सो उसको हम बोल सकते हैं ऑनबोर्डिंग. सो ऑनबोर्डिंग मतलब व्हेन एन एम्प्लॉय ज्वाइन. सो प्री ऑनबोर्डिंग, पोस्ट ऑनबोर्डिंग. प्री ऑनबोर्डिंग मतलब ज्वाइन करने के 1 महीना पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, राहुल को क्या सबमिट करना पड़ेगा. ज्वाइनिंग देयर इज ऑनबोर्डिंग. दूसरा होता है कि कंपनी के बारे में ऑनबोर्डिंग, अबाउट द पॉलिसीज, अबाउट व्हाट द रोल इज, अबाउट एक्सपेक्टेशंस, हाउ द कंपनी फंक्शंस इन जनरल. सो उसको हम बोल सकते हैं ऑनबोर्डिंग, जो कि अगेन HR करता है. सो ये सब चीज़ें HR कर. ऑनबोर्डिंग के अंदर क्या आता है भैया? ऑनबोर्डिंग के अंदर आता है न्यू हायर ओरिएंटेशन. सो न्यू हायर ओरिएंटेशन में क्या क्या आ जाता है आपका? डे 15 कनेक्ट. राहुल जब ज्वाइन करता है तो डे 15 में कोई कनेक्ट करना चाहिए, उसको बात करनी चाहिए, वो HR होता है. देन देयर इज इंडक्शन, कि उसका रोल क्या है, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका मैनेजर कौन रहेगा, कहाँ पे वो रिपोर्ट करेगा, कौन सी टीम में होगा, उसको इस एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना अगेन HR का काम है. देन न्यू हायर ओरिएंटेशन में आता है मंथली कनेक्ट्स. सो 30, 60, 90 डेज. 30 डे पे HR कनेक्ट करेगा, 60 डे, 90 डे. यहाँ पे पल्स चेक होगा, इफ ही सेटलिंग वेल, इफ इज अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसीज वेल, इज ही जेलिंग विद द टीम, इज ही अवेयर हु इज द मैनेजर, प्रोजेक्ट मिल रहा है या नहीं. सो दिस इज इंश्योर्ड, HR डज द चेक इन्स एट रेगुलर इंटरवल्स. में हो गया आपका न्यू हायर ओरिएंटेशन में. और एक चीज़ आता है बडी मैपिंग, बडी ओरिएंटेशन. अब बडी क्या होता है कि आप कोई नए ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो. राहुल इज गोइंग टू दिस फर्म X. He doesn't know anybody in that organization. He will feel helpless, clueless. But अगर राहुल का कोई सीनियर है उसी के कॉलेज का, and if that senior is interacting, he will feel better, right? He will feel at home, much more comfortable. So HR also does buddy mapping. They will identify people who Rahul can relate with, possibly from his college that he's coming from. They will identify and the buddy mapping will be done. They will be set. Now buddy का काम क्या है? So राहुल का buddy है आकाश. ठीक है. सो राहुल को आकाश से अब कनेक्ट कैसे करना है, 30-60 डे में कितना कनेक्शन होगा. सो बडी को क्या क्या राहुल को हेल्प करना है, कंपनी एसिमुलेशन, कल्चर एसिमुलेशन में कैसे रोल होगा. सो नाउ HR will do the buddy mapping. HR will guide the buddy how to help Rahul, so that Rahul is settling well in the organization and he's feeling at home. So research says that onboarding is very, very important, and you can find research that how onboarding plays a huge role. So in a nutshell, what does new hire orientation, what are the main components? So first, induction में basically हम क्या देना चाहते हैं एम्प्लॉय को, जो नया जॉइनर है उसको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री, कल्चर क्या है, इंट्रोडक्शन टू एग्जीक्यूटिव लीडर्स कौन से, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा नए ऑर्गेनाइजेशन में. देन पेरोल कैसा है, सैलरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट डिवीजन स्पेसिफिक, वो कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से बिजनेस यूनिट में, उसका इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड एनी additional questions during onboarding. So these are parts of new hire orientation. And as I mentioned about buddy system, why do we have? So it benefits 3 people, new hires, organization and buddies. New hire को एक support मिल जाता है, one-on-one assistance, smoother transition they can do. Organization के लिए positive impact on retention. It boosts employee satisfaction, जो new joiner है especially. And buddies के लिए, they get a chance to connect, improve their knowledge base, practice managerial skills and expand their network. And developing a buddy program that we have to do involves some steps, right? We have to establish the criteria for selecting the buddy, pair up the new hires with the suitable buddies that we've identified, orient the new buddies, provide the right buddy training, what is the expectations from buddies, give buddies a checklist of activities to complete. Then what do we do? Set expectations for both buddies and the new employees, and regular check-in with both buddies and the new hire for the feedback.
what are the responsibilities? एक अच्छे बड़ी का क्या होना चाहिए? They should help the new hire orient themselves around the office, familiarize them, introduce the new hire, new guidelines क्या है भाई, expectation क्या है, timeline कैसे भरना है, efforts कैसे भरने हैं, get them involved in social activities, get the new hire overview how things work basically in this company. ये एक बड़ी का role होता है. And we also measure the success of buddy through early workplace performance कैसा है बंदे का, new joiner का. We take feedback from all the stakeholders, their managers, are they assimilating well. We also how much awards and recognition programs we set up. There are regular one-on-one check-ins to check the success of the buddy system. So yeah, that helps a lot to both the new hire and the buddy. And some of the benefits of better onboarding process overall are क्योंकि कंपनी का भी फ़ायदा है, एम्प्लॉय का भी है. सो इट इम्प्रूव्स द जॉब परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ द पर्सन, द न्यू जॉइनर. इफ़ यू हैव द गुड ऑन बोर्डिंग देयर इज़ बेटर रिटेंशन पॉसिबिलिटी. नहीं तो लोग छोड़ के चले जाएंगे कि अगर उनको पता ही नहीं क्या करना है, अगर कोई चेक इन ही नहीं कर रहा है, ना कोई बड़ी है कहाँ जाना है. एंड इट इंक्रीजेस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ओवरऑल बाय स्पेंडिंग टाइम विद द न्यू हायर. इट गिव्स देम अ गुड assimilation. Some studies say 93% of businesses agree that onboarding can help new hires decide whether they want to stay. So इतना major decision बस onboarding के ऊपर होता है. 72% of employees report that one-on-one time with their direct manager is crucial to good onboarding. Employee manager connects are important. They will remain at company for longer time if they are onboarded really well. So main benefits are 78% say that they report revenue increase also. Obviously it benefits the company. They see most of their KPIs are improved. Employee engagement metrics are improved. So huge benefits of onboarding. Good onboarding program increases retention by 25%, improves employee performance up by 11%. So a lot of different researches have been done on onboarding, which I'm showing here. Top objectives of onboarding क्या होते हैं? It integrates employees to the corporate culture. Assimilation, अगर कोई college to corporate जा रहा है तो they can assimilate better. Complete compliance requirements, reduce time to proficiency, create new hire in with organization business strategy. They can align well and clarify the responsibilities and roles. So you can see other benefits of onboarding according to the companies also. Next step, Rahul, अभी राहुल के 90 days हो गए ऑर्गेनाइजेशन एक्स में. नाउ राहुल wants to जेल वेल इन द कल्चर एंड द वर्क. उसका काम क्या एग्जैक्टली उसको शुरू करना है. इंडक्शन सब हो गया है. अब मोस्टली अब क्या होगा एचआर का काम कि बिजनेस लेवल इंडक्शन देना, कि मेकिंग श्योर दैट राहुल इज अंडरस्टैंडिंग द रोल क्लैरिटी वेल, सो दैट दे कनेक्ट, द मैनेजर कनेक्ट्स, द लीडरशिप कनेक्ट्स. सपोज राहुल इज इन द ऑटोमोटिव डोमेन, automotive sector of IT, right? So make sure HR make sure that induction business level का हो रहा है. राहुल understand how the business works, कैसे क्लाइंट, कौन से हमारे क्लाइंट्स हैं, हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन से रोल्स हैं, राहुल की ट्रैजेक्ट्री क्या होगी, ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री. राहुल ने अभी इस बैंड में ज्वाइन किया है, B1 B2 B3, आगे जाके क्या वो बन सकता है, सीनियर डेवलपर, टेक लीड, ये वो. सो राहुल को वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, सो दैट बिजनेस द लीडर शुड कनेक्ट. सो HR डज द इंडक्शन, बिजनेस लेवल इंडक्शन. देयर इज ऑल हैंड्स मीट, कि सब कुछ बिजनेस सब एक साथ आए और सबको पता चले कि क्वार्टर में क्या हो रहा है, रिजल्ट्स कैसे है, what are the goals, upcoming priorities of that business, so that overall expectations is set for Rahul, what he wants to achieve, what he needs to achieve, how he will be judged, on what parameters his performance will be based. So all that understanding setting is done by HR. Also takes helps of the business, the managers setting the inductions. So this comes under culture and work. So culture and work assimilation का काम भी HR का होता है. So onboarding के बाद culture and work assimilation बोल सकते हैं. सो कंपनी कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर के बहुत सारे डेफिनेशन है. इट इज शेयर्ड बिलीव्स एंड बिहेवियर्स दैट डिटरमाइन हाउ कंपनीज, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट इंटरैक्ट. how the shared beliefs are there, values are there. It is the smell of the organization. किसी कंपनी का टॉक्सिक कल्चर, किसी का अच्छा कल्चर. So it is the smell of the organization, shared beliefs and values, behaviors. And how do we measure the company culture? These are all the different aspects. We take surveys, there's focus groups, small groups में discussion होता है. Exit जब होता है किसी एम्प्लॉय का, उसको पूछते हैं भैया आपको क्या अच्छा नहीं लगा. आपका बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल से मेजर होता है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल असेसमेंट होता है. सो इससे, इन सब चीज़ों से वी मेजर कि कंपनी का कल्चर कैसे लग रहा है लोगों को, व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. देयर इज एंगेजमेंट सर्वे. एंड HR प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कंपनी कल्चर. अगर कुछ सेट करना है, वैल्यूज़, शेयर्ड बिहेवियर्स,
हैबिट्स शेयर करने हैं, कंपनी का विजन मिशन. सो कल्चर फॉर्म्स अ फैक्टर. अगर आपको हाई परफॉर्मेंस कल्चर चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, so we have to clearly define it, communicate it to the employees, ensure that employees are good fit to the culture, encourage diversity and inclusion, provide support for well-being, and measure employee performance. So how HR basically leads organization culture change, right? So they are strategic partner in driving the cultural change. Uh, some offices have dedicated culture officer at in the HR field. They bring purpose and values to life. Purpose क्या है organization का, कैसे हम जी रहे हैं. They set the tone, align policies and processes according to the culture. Unless we bring it to the systems, the culture won't happen, right? And help employees learn the skills required, use metrics to measure workplace culture. So HR plays a very strategic role for culture change and bringing in certain culture in the organization, which is very very important. Now Rahul is like 60 6 month हो गए राहुल को in the organization, let's suppose, but during the time he has a lot of queries कि मेरा सैलरी इतना कम क्यों, इन हैंड सैलरी इतना कम क्यों आ रहा है, मेरा पीएफ लिंक क्यों नहीं हुआ, हाउ डू आई एनरोल माई पेरेंट्स फॉर द पेरेंटल इंश्योरेंस, मेरा सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, स्टैक कैसा है, हाउ डू आई डिक्लेयर माई इनकम टैक्स, ब्ला ब्ला, हाउ डू आई टेक द कैब फैसिलिटी, how do I make sure my transport, I'm shifting from base location Pune to Mumbai, so uske expenses mein kaise reimburse karwaun, medical expenses, blah blah, so many things are there. So these are queries, right? So queries about the policy. So HR is the champion, policy champion, right? So HR के लिए जो भी organization policies होती है, HR develops those policies, and वो policy guidance देना, depending on the query, is the role of HR again that comes into play. A lot of people will have questions, so there is a dedicated HRSS team, HR shared services, that operates. अगर आपको राहुल को कोई दिक्कत हो रही है, they can raise a helpline ticket. वो ticket पीछे के HR शेयर्ड सर्विसेज टीम को जाएगा. दे विल रिस्पॉन्ड ऑन दैट टिकट डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी गाइडलाइन. पॉलिसी ये कहती है कि आप वाईफाई रीइंबर्समेंट के लिए 600 रुपये क्लेम कर सकते हो. तो राहुल को वो डाउट था, क्लियर हो गया. सो HRSS टीम ने बोल दिया कि मेडिकल इंश्योरेंस में आपको ऐसे ऐसे क्लेम करना है, ये पॉलिसी है, ये पाथ है, आपको यहाँ पे जाके डिक्लेयर करना है. सो HRSS टीम का काफ़ी एवोल्यूशन हुआ है. पहले जो HR जनरलिस्ट होते थे, BPs होते थे, HR बिजनेस पार्टनर, दे यूज टू परफॉर्म द टास्क. वन कॉन्टैक्ट पर्सन होता था, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर एन इंडिविजुअल. इमेजिन यू आर टेकिंग ऑल द क्वेरीज, इट विल हैव नो टाइम टू हैंडल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स. देन लेटर ट्रांजैक्शनल वर्क इन सेंटर्स होने लगे, आउटसोर्स करने लगे. टिकट मॉडल हुआ कि टिकट जनरेट कीजिए आप अगर कोई क्वेरी है. एंड नाउ पोर्टल फॉर सेल्फ सर्विस, डायरेक्ट एक्सेस, फोकस ऑन द एंड यूजर. अभी चैटबॉट्स भी आ गए टू हैंडल द क्वेरीज. अभी क्वेरीज को हम टीयर्स में बांट सकते हैं. टीयर 0 कैन बी फॉर सिंपल क्वेरीज, टीयर 3 कैन बी फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज. सिंपल क्वेरीज तो आप पॉलिसी देख के सेल्फ सर्विस HR पोर्टल पे या फिर टिकट रेस करके ही कर सकते हो. एंड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू द HR बिजनेस पार्टनर्स विच आर फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. सो एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन हियर. सो HR shared services basically एक टीम होती है जो have fair idea of HR operations. They manage all the documentation at one place. They simplify and define the HR structures. They are policy champions. So अगर राहुल को कोई query आती है, राहुल can raise a helpline ticket that will go to the HRSS, and depending on various queries, there's global people operations team under HRSS, which will handle Rahul's query. So HR business partners need not handle all the queries. क्योंकि स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स में देने तो यू कैन नॉट लुक एट ऑल एम्प्लॉय क्वेरी. सो देर आर डेडिकेटेड सिस्टम्स फॉर्म लाइक HRSS, विच इज़ अ स्टेप अहेड ऑफ आउटसोर्सिंग एंड HR ऑटोमेशन. सो डोंट वरी, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट ऑल द एम्प्लॉय क्वेरीज कि मैं कैसे हैंडल करूंगा. यू विल हैव इनफ टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक थिंग्स. So there are a lot of benefits of HRSS. It reduces the cost and support that we need for HR operations, focuses on manpower and core business by outsourcing your administrative HR activities. जो आपको administrative task है, repetitive है, वो HRSS can handle it, like payroll service, capability development, and access pre-scoped HR services and enhance your HR system and processes by having a structured ticketing system. So a lot of benefits of HRSS. राहुल बोल रहा है यार 3 महीने हो गए, भाई मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो. HR comes into play, they guide them. Next is WMG, Workforce Management Group, the operations team. HR operations make sure that Rahul gets the project according to his skills. Okay, now Rahul moves ahead. Rahul को अभी 9 month हो गए organization में almost, right? But during this journey, HR has to make sure that Rahul is engaged in the work. Now, what does engagement mean? Engagement means this. So Rahul is, having the work level engagement. He's satisfied with his job. Also,
very important. He is gelling well with the team, the managers, team building activities are done so that employee feels engaged. Not just अगर I mean nobody will like just काम करो और घर पे जाओ, ठीक है, काम करो घर जाओ, ना टीम बॉन्डिंग है, ना टीम के बारे में जानते हैं. सो इट इज सेड दैट इफ यू हैव अ फ्रेंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो यू आर लाइकली टू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग. सो वो कैसे वो एनवायरनमेंट बिल्डअप किया जाए. सो देयर कैन बी लॉट ऑफ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़. सो राहुल को क्या चीज़ें पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, वो टूर्नामेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. सो और क्या क्या चीज़ राहुल कर सकता है. How can he mingle with people, network with people? That comes under employee engagement, and HR also does the employee engagement. So these are all things done by HR. So HR will make sure that Rahul is gelling well with the team bonding is there, he's assimilating in the culture of X is the name of the organization. टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ आर देयर. बहुत लोगों को लगता है यार ये रंगोली मेकिंग कंपटीशन क्यों करा रहे हैं. एचआर का काम रंगोली बना, रंगोली का नहीं है वो बहुत पहले मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में लोगों को जिसको करना था वो रंगोली करते थे, अरेंजमेंट करके देते थे एचआर, सो दैट पीपल आर एंगेज्ड, पीपल फील वन विद द ऑर्गेनाइजेशन, दे कम अप टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. सो जस्ट इमेजिन कितना लाइफ कलरलेस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में इफ देर आर नो सच एक्टिविटीज़. इट विल बी सो ब्लैंड. अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, ना क्रिसमस सेलिब्रेशन, दिवाली, नथिंग is happening, no sports tournaments, nothing, no musical, no cultural activities are happening, your life will become very bad. Rahul will feel very bored कि यार ठीक है यहाँ पे काम अच्छा है पर ना मेरे दोस्त है, ना मेरी हॉबी के लिए कुछ है, ना मैं अपना कुछ मैं डांस करता हूँ, ना मैं कुछ अपना टैलेंट दिखा पा रहा हूँ किसी को, ना मुझे अपने कुछ और मैं दोस्त बना पा रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कॉलेज वाले छूट गए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई दोस्ती नहीं है. सो HR will make sure that there are off-site events, people are going outside mingling with each other. So these are done through the employee engagement activities. So team bonding, assimilation in the culture, team building, festival celebrations. So ये आपको लग रहा होगा छोटा पार्ट, बट इसके बहुत तगड़े रिजल्ट्स होते हैं एम्प्लॉई के हैप्पीनेस पे एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे. अगर एम्प्लॉय एंगेज होगा तो ही वो काम कर पाएगा, तभी रिजल्ट्स आएंगे, तभी बिजनेस को हेल्प होगी. So as we should start with the why first, कि why does employee engagement matter भाई, क्यों? क्योंकि better workplace safety improves the productivity of the employees, improves business performance, तभी तो कंपनी पैसा डालेगी इसमें. There's higher retention due to employee engagement, there's better customer service. If your employees are happy, they will serve the customers better. Customer happy, revenue आता है, तो इसके benefits ही है. So you should always ask with why, कि ये why होता है, कंपनी क्यों करती है ये सब. Then there's what are the key drivers of employee engagement, right? So healthy work culture, obviously toxic नहीं होना चाहिए. राहुल को opportunities मिलनी चाहिए growth के लिए. Rahul should be rewarded, he should feel recognized. Rahul should have work life balance. Rahul should have feel like he's included, there's diversity and inclusion. Everybody should feel equal opportunities there. Working environment should be good, training and development opportunities should be there. There should be leadership, should be competent. कोई भी मैनेजर मेरा ऐसे ही नहीं होना चाहिए ऐवे ही. There should be shared ownership, right? So these are all the key drivers of employee engagement. Effective communication is also one of them, right? So key drivers, again, some say that relationship with the direct manager is very important. 80% feel that. 70% say that lack confidence, belief अगर नहीं होगा senior leadership पे, then they will not be engaged. So आपका leadership में भरोसा होना चाहिए, आपके साथ manager के साथ relationship अच्छा होना चाहिए, and you should feel proud working for the company. अगर proud नहीं कर रहे हो तो you will be disengaged. सो ये सब आइडियाज़ आपने देखी होंगी आपके कंपनी में हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है क्यों होता है ये सब. तो थ्रू रिलेशनशिप्स आपका एंगेजमेंट बढ़ता है, आपका बॉन्डिंग कैसा है टीम के साथ, इसलिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होती है, टीम लंचेस होता है, यू गो फॉर अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, आपको रिकग्नाइज किया जाता है, फन वर्क प्लेस बनाया जाता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, कंपनी कल्चर अच्छा बनाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी दिए जाते हैं, फीडबैक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, वर्क फ्रॉम होम देते हैं. सो ये सब चीज़ें ड्राइव करती है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, राइट? सो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट द कंपनी. 35% ऑफ एम्प्लॉयज़ across departments say that team building are worth it. 49% say that team building are most effective with 10 to 30 people पर होना चाहिए. Entry level employees say team building helps their creativity also. 51% millennial workers think team building helps retain talent. So सबके लिए important है, millennials हो, Gen Z हो, कोई भी हो. Then how to retain employees for years, long term retention कैसे होगा? Sense of belonging चाहिए कि having people at work who they can be around, be themselves, pretense ना हो, benefits होने चाहिए over perks, strong workplace benefits, leadership.
So there are obvious perks if you engage and enable your employees, and here's how you could benefit. You could increase the employee performance by 40% if they feel engaged in their job. You can increase customer satisfaction rates by 18%, multiply your financial success by 4 times. So decrease employee turnover, मतलब attrition rate, कंपनीज में एम्प्लॉयज कम छोड़ के जाएंगे. और अगर डिसएंगेज है, राहुल एंगेज नहीं है, तो राहुल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी बाई 18%, लोअर प्रोडक्टिविटी रेट्स, एंड मोर लाइकली राहुल अवॉइड करेगा ऑफिस जाने के लिए, ही विल टेक लीव्स, ही विल नॉट रिपोर्ट टू वर्क. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ disengagement, right? So top drivers, again, some studies say recognition. If you recognize Rahul for his good that he has achieved good results, it will help. You should give more autonomy, थोड़ा freedom चाहिए, micro management नहीं चाहिए, inspiration होना चाहिए, पे तो obviously होना चाहिए, higher pay, better training, desire promotion, ये सब चीज़ें top drivers है engagement drive करने का. राहुल अभी 1 साल हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, बट राहुल वांट्स टू ग्रो हिज स्किल्स फर्दर. और राहुल को पता है कि एआई आने वाला है, सो एआई की वजह से उसके स्किल्स उसको बढ़ाने पड़ेंगे. चैट जीपीटी का कोई कोर्स है क्या, यूडेमी, लिंक्डइन कुछ है क्या, व्हाट आर माय लर्निंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो हियर कम्स L&D. So L&D team comes under, again, HRs are in the L&D team, learning and development. यहाँ पे they make sure that Rahul gets the resources for his growth, for his learning, tutorials, virtual led instructor sessions, offline sessions, online sessions. L&D team will make sure there are bite-sized videos for his learning needs. Udemy का subscription उसको मिल रहा है, Coursera का मिल रहा है, whatever he wants. Rahul should be able to grow in the organization, and what he joined, his skills should multiply, so that ओवरऑल अगर लर्निंग नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, राहुल विल फील यार वेरी स्टैगनेंट, यार इसमें मेरी लर्निंग नहीं हो रही है. नो, ही वुड फील कि जो वो काम कर रहा है उसके लिए वो कुछ सीख ले और अप्लाई कर सके तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. सो दीज लर्निंग वर्कशॉप्स, ट्यूटोरियल्स, subscriptions, the whole learning trajectory of an employee, various resources in demand, training activities, coaching, all that is taken care by learning and development team. So you can take a look what L&D does apart from this. Let's see how HR and L&D team can work together. So you can see at the left HR, then L&D, and how they work together. First scenario, HR generally focuses on management of employees. L&D focuses on sessions and workshops. Together they can do performance management initiatives to analyze employee ka performance, Rahul ka performance, right? So next is, building employee relations. HR focuses on building industrial relations. L&D focuses on skill development. Together they can do strategic, career driven growth for the employee, for Rahul. Third, focus on creating HR policies. L&D value driven training sessions, and together they can do great onboarding. So L&D is a COE function, specialist function. There is a role of HR in successful training and development process of the employee. So why organization needs an L&D plan? Because to attract and retain top talent. Rahul को अगर growth नहीं मिलेगी, skill development नहीं होगा, he won't stay in the organization. To provide career development opportunities, enhance capability development, recognize strength and weaknesses, ensure brand consistency throughout the organization, improve the culture, boost employee performance and productivity, and hence improve the satisfaction customer, right? So all of this is achieved through L&D plan, and there are these stages. You can take a look, you can pause and have a look at all the stages of L&D. So I won't go through each one. So it's broadly role-based competency mapping, followed by skill assessment, learning analysis. So it will get a bit technical. You don't need to know all of this, but yes, so it's a whole plan. There are stages in L&D, and they have a lot of work. It's not like एक बार L&D program बना दिया, Udemy course दे दिया तो अपना काम हो गया. So they work strategically throughout the year to make the right plans. L&D manager, what are the main tasks? As you can see, analyze and act on employee training needs, plan, develop, provide training and development programs, evaluate instructor performance, etc. And these are the skills required: stakeholder management, business acumen, cultural development, technology, being a technology steward, right? All of this. And let's see types of L&D initiatives that HRs can do. There's new employee training and onboarding. There's managerial training, train the trainer, train the managers to be effective leaders. Soft skill development for, people coming from college to corporate, they need soft skills development trainings. There's diversity, inclusion, equity, belonging training, technical skill development, everything comes under L&D. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 8, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ओके, सो अभी राहुल को 1 साल हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका एनुअल अप्रेजल, ही इज एलिजिबल, उसको कुछ रेटिंग मिलेगा, उसके ऊपर से उसको हाइक मिलेगा. हाइक मतलब कितना
पगार बढ़ेगा। राहुल को सपोज कोई अमाउंट पे ज्वाइन किया है, 6 लाख पे ज्वाइन किया है, राहुल तो सोचेगा ना यार मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, 1 साल हो गया। नाउ हु विल डू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट राइट फ्रॉम, सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब अप्रेजल भी होता है, जहाँ पे क्वार्टरली अप्रेजल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है। सो उसमें होता क्या है, बेसिकली जो मैंने काम किया मैं अपना सेल्फ रिव्यू दूंगा कि मैंने ये क्वार्टर में ये काम किया है, डिपेंडिंग ऑन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मैंने कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, ये इसके सक्सेस पैरामीटर्स थे और इस पे मैं जज होने वाला हूँ, मेरा मैनेजर इसके ऊपर मुझे रेटिंग देगा। सो पहला स्टेज होता है सेल्फ रिव्यू, कि सेल्फ रिव्यू मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैंने कैसे काम किया है, उसको मैं रेटिंग दूंगा 3-4 अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, राइट। देन माय मैनेजर विल टेक द रिव्यू, विल सी व्हाट ऑल आई हैव रिटन इन माय सेल्फ रिव्यू, ही विल नाउ गिव हिज कमेंट्स कि यार राहुल तुमने ऐसे काम किया है, तुम ये इंप्रूव कर सकते थे, दीज आर योर इंप्रूवमेंट एरियाज, दीज आर द थिंग्स एरियाज यू डिड वेल। So that discussions happen between the manager and Rahul. Then the ratings are fixed. Then the letter, the compensation increase letter is given to Rahul. Before that, who decides कि कितना पैसा मिलेगा राहुल को, that is decided by the compensation and benefits. So compensation and benefits is again one of the most important team that decides कि लोगों को, कौन से लोगों को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितना हाइक मिलना चाहिए। That again HR does कि आपको सैलरी कितना होगा, कितने बेनिफिट्स होंगे, आपका HRA कितना होगा, आपको और क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, रिवॉर्ड्स क्या क्या होंगे। सो बेसिकली कितना पैसा मिलेगा इज डिसाइडेड बाय HR, कितना हाइक मिलेगा आपको इज डिसाइडेड बाय HR। दैट डिपेंड्स ऑन द लॉट कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का बजट कैसा है, ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट the HR will, the compensation and benefits team will design a framework philosophy for that year's appraisal कि इस साल हम top talent, so all appraisal compensation philosophy में the top talents are the ones who are favored. So अगर आपका 5 स्केल का रेटिंग है 1 2 3 4 5, राहुल इज रेटेड 3, ही विल गेट सर्टन हाइक, ही इज रेटेड 4, ही विल गेट मोर हाइक, 5 हाईएस्ट हाइक। सो वो हाइक परसेंटेज कितना है, सो कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स टीम विल मेक श्योर कि 4 and 5 रेटिंग्स को ज़्यादा पैसा मिले अक्रॉस द रीजन्स इंडिया, ऑफ ऑन साइट में कितना है, ऑफ शोर में कितना है, वो उनके सैलरी स्ट्रक्चर में कैसे जाएगा। एंड वो मार्केट एनालिसिस करेंगे कि बाहर इतने लोग दे रहे हैं, हमें कितना देना चाहिए कि लोग खुश भी रहे, रिटेन भी रहे। क्योंकि अल्टीमेटली आपको बाकी सब मिल रहा है पर अगर पैसा नहीं मिल रहा है, सो आप नहीं खुश रहोगे ज़्यादा दिन, राइट। सो पीपल विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन इफ दे फील दे आर अंडर पेड। If they are fairly paid, they'll still stick if the company culture is great, work life balance is great, manager is good, learning opportunities are great, and average पे भी है पर बाकी सब चीज़ें मिल रही है, फिर भी लोग रह लेंगे। पर अगर compensation बहुत ही लो है मार्केट स्टैंडर्ड से तो कोई नहीं रहेगा, राइट। I think this will be the easiest to relate why is compensation and benefits important, right? अगर आप employee हो, राहुल को क्यों चाहिए पैसा, क्यों compensation and benefits चाहिए? To increase loyalty, to stay longer, to stay loyal to the organization. During negotiations, rewarding high performance workers, जो high performing है उसको reward करने के लिए, recruitment and retention, maintaining employee morale. Also, there are types of compensation. Okay, it is base pay, commissions, bonus pay, there's equity package, stock options, RSU benefits, other benefits, non-monetary compensation. So there is something like variable pay, fixed pay, and so using all of these techniques they inflate the package also. जो आपको दिखता है 1 करोड़ का पैकेज वैसे नहीं रहता है IIT में। So total rewards में क्या क्या होता है, compensation होता है, benefits and performance and talent management. So ही total function को हम total rewards के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्लब कर दिया जाता है। सो कॉम्पनसेशन इंक्लूड्स वेजेस, सैलरीज, वेरिएबल पे जिसमें बोनस, इंसेंटिव, स्टॉक ऑप्शंस। बेनिफिट्स में क्या होता है, देयर इज हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, पेड टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एजुकेशनल असिस्टेंस, वर्क लाइफ सपोर्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप देख सकते हो एट द राइट। सो दिस कम्स अंडर टोटल रिवॉर्ड्स। There are types of employee benefits. There are benefits at work, benefits for health, benefits for financial security, lifestyle benefits, and your organization has to give all of these to make it attractive for Rahul to stay in the organization, right? Like skill development, gifts and activities, healthcare, wellness, well-being, insurance, finance benefits, etc. So roughly there's like compensation benefits also has fixed pay, variable pay, equity pay, medical insurance, accommodation. So I want to cover everything so that now you're getting the idea what are the total compensation में तो पैसे का बात आ गया, benefits में what are the extra benefits, non monetary, monetary that you're giving to the employee to make it attractive for Rahul to stay. And the compensation and benefits team is under HR only, right? HRs are the part of this team. And the objectives are very clear.
they retain employees, ensure equity, pay equity, reward the desired behaviors. If we want to reward the high performance culture, do the reward the top talent, we do so. Control the cost, facilitate understanding, comply with legal regulations. All of these are objectives of compensation and benefits management. So that ensures employees are fairly compensated. Fair नहीं होगा तो nobody will stay. Attract the right employees. अगर package नहीं अच्छा होगा तो nobody will stay, right? Create a reward structure. Timely rewards and recognize करना चाहिए, monthly, quarterly, whatever. Promote loyalty and adhere to legal compliance. So there are legal compliances also across countries. India, outside Germany, Europe जाओगे उनका भी आपको follow करना पड़ेगा, right? Work councils are there, for example, in Europe. So there are types of compensation. Again, direct financial compensation, indirect, then there are benefits, and then there are perks. And future trends in comp and ben are there will be increased focus on pay equity, right? सबको representation pay equity होना चाहिए. There will be flexible pay plans, performance based compensation होगा, increased transparency. Everybody will be see कि किसका salary कितना है. Then there will be technology driven compensation. All of these are future trends. And again, to make it clear, there is direct compensation, indirect. Direct में आता है आपका basic pay, basic salary, rent allowance, जिसमें medical allowance, special allowance, etc. Indirect में क्या होता है? Flexible time, overtime policy, shift policy हो सकता है, insurance हो सकता है, leave travel, LTA, retirement, holiday homes, leave policy. So all of this comes under indirect compensation, right? सो येस, टोटल कॉम्पेंसेशन, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन में आप लेफ्ट में देख सकते हैं, इनडायरेक्ट राइट में मोर डिटेल्ड व्यू यू कैन गेट. सो जस्ट टेक अ पॉज, ग्रैब द स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू इट. सो टोटल रिवॉर्ड्स, जैसे मैंने बोला, इट क्लब्स एवरीथिंग एंड इट फॉर्म्स एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन. सो total benefits, recognition, development, well-being, compensation, everything comes under the total rewards function under HR. So some studies say top factors when choosing a job. 67% say salary is one of the top factors, right? Salary बहुत important है लोगों के लिए. And 63% say benefits as the top factor. So total compensation and the benefits both are very important for people to make the decisions. And 57% people say benefits and perks are their top considerations before accepting the job लेने से पहले they search about it, they ask their HR, their seniors, and the most popular employee benefits are health insurance, flexible hours अगर है, that is also popular, more vacation time, work from home options. So these are all popular employee benefits that can be given. 53% employees say employer provided benefits contribute to their overall job satisfaction. So this is the why. This is why comp and benefit team works to increase the job satisfaction, and these are the reasons why it is important. It increases overall employee happiness, productivity भी बढ़ता है अगर आप happy हो अपने compensation से, आपका burnout कम होगा, absenteeism आपका कम होगा, loyalty बढ़ेगा, company will be competitive, and it will incentivize the right set of behaviors within the organization. It will attract the top talent, top performers. It will boost the motivation, employee को engage करेगा, productivity exactly बढ़ाएगा, and hence retention will be improved. So this all is now performance management में. तो HR will facilitate all this. He make sure कि discussions होने चाहिए manager and employee के बीच में, राहुल के बीच में, hike कितना होगा, कितना पैसा मिलेगा. All this performance management is done, and make sure that top talent in the organization is retained. They feel good. They are given adequate amounts. Make sure कि राहुल का performance सही से जज हो रहा है, राहुल को सही रेटिंग मिल रहा है उसके performance के हिसाब से, and manager राहुल से connect कर रहा है, उसको feedback दे रहा है, review दे रहा है, and राहुल is okay with the, and वो letter release हो रहा है, compensation letter, that is all taken care by HR. So थोड़ा सा let's delve deeper into performance management. It helps managers to monitor and evaluate employees' work basically. It is a set of interactions between managers and employees over a course of business year. So quarterly 4 हो सकता है and yearly 1 हो सकता है. That helps in the promotions, advancement, recognition, training, salary administration, any discipline or performance improvement plan. अगर कोई कम rating है तो उसको performance improvement plan में डालना पड़ता है, और you can be terminated if you are very low rated. So these are all the purposes of performance management. So it will be a judgment of your past performance, and
it will be development of future performers. Both are the goals, both are the purposes. So past performance में आपका basis आपका कैसा रहा है last quarter का, and future में आपको कौन से development areas है to overcome the barriers, right? So this is a whole cycle. There'll be planning, there'll be monitoring, reviewing, and then rewarding. So planning may you align the teams and you set the goals and objectives. Then there's monitoring, regular track record, progress check होता है manager के साथ. Then you reward and recognize them, and then that is there to then finally reward and give the letters. And 5 stages completely होते हैं. You can take a pause. There's planning phase, monitoring phase, then there's a learning and development phase also, where they can fine tune the knowledge and approach to better suit the project needs. अगर कुछ change करना है तो there's feedback phase, and finally there's a reward phase after the completion of the project or the year. So these are the stages of performance management. This is done by HRs. So the framework is there in front of you: performance goal setting, monitoring performance, developing capacity to perform. Then there's evaluating the performance using scorecards and various incidents, rewarding high performance, top performers. So this is the framework, one of the frameworks. And yes, prioritize the most important objectives of the performance management process is the goal to align, to improve the engagement, to build a performance development culture, high growth culture, growth mindset, and ensure that managers and employees connect regularly. Effective two-way dialogue is there. So in a nutshell, performance management is, it's a process used to identify, encourage, measure, evaluate, improve, and reward employee performance. And appraisal क्या होता है फिर? What is the difference? So it is a process of evaluating how well employees perform their jobs, then communicating that information to employees. That is under appraisal, and performance management is more broader. And the fundamentals are again goal setting. You need to set the goals for the coming quarter with discussion with your managers. Then there's ongoing development, year-end appraisal, where leader should focus on rewarding over performers while developing others instead of trying to differentiate. And then there is total rewards, जैसे हमने already cover किया था. This is by McKinsey and Company. And then there are elements of successful performance management. Successful monitoring should be there. There should be timely reviewed, setting the right expectations, offering incentives that motivates employees, reduce poor performance. So suppose Rahul is feeling, his manager is not treating him well. They are always scolding him. Rahul is feeling frustrated with the boss. Where does Rahul go? Rahul will go to the HR, right? Suppose there's a girl Rashmi. Okay, now Rashmi feels that her boss, her manager, or her manager is not treating her well, giving wrong messages, calling at the night. कुछ गलत हो रहा है, basically sexual harassment हो रहा है. So where will they go? They will go to the HR again. अगेन कुछ सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हो जाता है, कुछ हाथापाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. सो ऑल द डिसिप्लिनरी एक्शंस विल बी टेकन बाय HR टीम. सो HR विल बी इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन एंड मेकिंग श्योर इट कम्स टू क्लोजर. किसको वार्निंग देना है, किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी, किसके ऊपर ओमबर्ड्स, किसको निकालना है. सो बहुत सारे लोगों को हम निकालते भी है डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ द सिचुएशन. इफ़ देयर आर इंटेग्रिटी इशूज़, किसी ने कुछ गलत चीज़ें की है, गलत सर्टिफिकेट दिखाया है, previous organization का fake experience दिखा है, that disciplinary actions is taken by HR. So making sure that labor laws are not violated, legal actions are also taken by HR. There is a legal team that works with HR team and they investigate the matters and bring it to closure. इसमें sexual harassment हो गया. Also making sure that diversity and inclusion is there in the organization. So inclusion and diversity is again one of the great works that HR does, making sure that there's enough women representation, LGBTQ representation, physically handicapped representation, making sure they are getting the right facilities to help them enable and grow. So there is equitable environment. Everybody is getting right seat at the table. Nobody is feeling ostracized because of their situation. So what we do in the performance management is we make sure that women are also nominated equally as men for the roles. If they are getting the right ratings, the certain number of 50% of women should be nominated and 50% men should be there. So this is not quota or reservation. These are the things because we have to do to bring women up to speed, because still the society is skewed towards men. It is a patriarchal society. It favors the rich, the men, and the poor, the downtrodden, the physically handicapped, people from different sectors of the society which are underlooked, underprivileged, they are not taken care. So HR makes sure that diversity and inclusion is there. Nobody does any discrimination against each other. And there is enough diversity, representation of all the different people that exist in the society, be it women, LGBTQ, physically handicapped. Everyone should be
there in the organization, and they should get the right to promotion according to their performance. They should be paid well, they should be treated well. So let's understand more about the terms in diversity and inclusion. Diversity is multiple identities represented in the organization. Inclusion is thoughts, ideas of all individuals matter. Equity is, distributing power, and then the subset is belonging. An organization that engages full potential of the individual, where innovation will thrive, views, beliefs, and values are integrated. So ये तीनों का मिश्रण diversity, equity, inclusion फॉर्म होके belonging होता है, right? Very important. And diversity basically asks who is in the room. Equity asks who is trying to get in the room but can't. Inclusion says, has everyone's ideas been heard, respected? And belonging is all of that. So differences, so you can see diversity, presence of differences. Equity is fair access, opportunity to all. Inclusion is genuine sense of belonging and value, right? So left may equality and right may equity. Very, very important, and you can understand from the picture what is equity. So as a DEI consultant, what are the responsibilities? DEI initiatives run karo, serve as central DEI resource, ensure diverse inclusive workforce, diverse company culture. So lot of responsibilities and diversity and inclusion. So yes, you can pause and take a look at it. I will explain through this. Equality is inviting everyone in the party. Diversity is that among everyone is invited and represented. And belonging, then there's equity, inclusion. You can भैया आप मेजर कैसे करते हैं DEI? So across metrics are there, demographics across organization levels, across bands. Then there's turnover, employee, adverse impact कितना है, candidate demographics कैसा है, initiatives focusing on equal pay and pay equity, employee advancement, promotion rate कितना है male female का. Then there's inclusive hiring हो रहा है कि नहीं, recognizing diversity levels at level playing field for everyone, ensuring fair hiring practices, fighting against recruitment bias and discrimination. All of this is taken care by DEI I'll team talk about under promotion. HR. So Rahul is now 2 years in the organization. Rahul thinks कि यार अभी salary भी हो गई पर 2 साल हो गए. I need to be promoted to the higher role. I'm already performing much better duties, higher duties than my actual role is. So promotion भी is taken care by HR. वो actually performance management में ही आता है, but I have written so that you understand. So वो promotion के guidelines क्या होंगे, eligibility क्या होगी, promotion में making sure that enough representation of women is also there, LGBTQ is there. So making sure that guidelines philosophy is done. So all the promotion is also taken care by HR, releasing the letters, promotion में कितना पैसा मिलेगा. So making sure who is taking the nominations from business, the managers, and also we are asking कि यार आपने इसको टॉप टैलेंट होके भी इसको क्यों नहीं मिल रहा है प्रमोशन. दैट इज ऑल्सो टेकन केयर बाय HR. सो HR इज नॉट जस्ट वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर द राइट ऑफ द पीपल ऑल्सो. दे कैन बी एडवोकेट्स ऑफ पीपल. द गुड HRs विल बी डूइंग दैट, अदरवाइज जो पपेट HR है, दे विल ओनली लिसन टू द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. So this is very important to understand purpose of promotion. Recognize employees' performance basically towards better performance, develop competitive knowledge and skills, fill up jobs vacant position, utilize more effectively the knowledge and skills. So job promotion criteria can be if Rahul has a positive attitude, if Rahul is working well with the team, if Rahul has the ability to constantly prioritize work and meet the deadlines. अगर नहीं हो रहा है तो मुश्किल हो जाएगा promotion के लिए. And consistently putting the team's best interest ahead of their own. These are all typical criteria for job promotion across organizations. So it can be how much experience is there in the job, कितना time हो गया है, high performance level in the last 2 years में राहुल ने कैसे perform किया, is he top performer, skill set क्या match हो रहा है, personal motivation and willingness है या नहीं, change in responsibilities. Next part है talent management. Now Rahul is a top talent. Rahul is getting 4-5 ratings in his last 2 appraisals. He feels कि यार मेरे लिए कुछ और होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. आई एम नॉट एन एवरेज परफॉर्मर, आई शुड बी ट्रीटेड रियली वेल. ठीक है, आई एम अ टॉप टैलेंट. सो टॉप टैलेंट रिकॉग्नाइज करना HR का काम है, हु इज़ देयर, and making sure that top talent is differentiated. They are getting focus group discussions, they are treated well. उनके लिए हम engagement ज़्यादा कर रहे हैं. We don't want to lose them. We make sure that there is succession planning in case people leave the organization, who will be there if is as a backup, who will be there in the leadership roles. That succession planning is also done by HR. Who will be the right people at the right positions in the organization, where should they go, which department, role rotation, job rotation.
then making a catered individual development plan, IDP for the people. For Rahul, कि उसका promotion भी हो गया. Rahul is a top talent now. He should have different options also open. On site जाने के लिए he should be eligible. So making sure that top talent is differentiated well is taken care by talent management team. So these are more duties of talent management. You can have a look. So what are the aims of talent management? First is succession planning. Identify, develop credible pipeline of people. अगर एक छोड़ के गया तो उसकी जगह पे कौन आएगा basically. Then there's workforce segmentation perspective. Engage and retain the best people. Maximize contribution perspective. Generate information about talent demand and supply, which is called workforce planning perspective. Then there's process perspective. Embed business driven processes to identify, develop potential and individual perspective. Yes, talent management framework कुछ ऐसा हो सकता है. First is talent strategy and planning, followed by talent acquisition. Okay, so TA team and HR work together. Then there's employee performance management, training and development. Succession planning is basically talent pipelines, profiles, succession management. Then there's total rewards. All comes under this framework of talent management. And what is the strategy? The ideal talent management strategy is a joint effort between the talent acquisition and HR to find, hire high quality candidates, onboard them efficiently, and ensure they are supported during their time at the company. So Rahul, making sure that Rahul is supported, and in turn business can satisfy and retain the top talent, which helps attract them more top talent. So this is the strategy in 101. First is strategic workforce planning, attracting top talents, hiring the right fit, conducting right assessments, and retaining the employee and developing the skills of the employee. So all of this consists the talent management framework, very important, and one of the vast areas of that HR manages. And why is it important? Again, it attracts the best talents, it keeps employees motivated, availability of resources is there through succession planning, and then succession planning, of course, then improved customer satisfaction. These are all the whys of talent management. And strategy can involve everything from recruiting, total compensation, onboarding, connection, community, employee engagement, training, development, purpose, and succession planning and exit process. So these are all parts of the talent management strategy. I'll not go deeper because it will be more technical, but in short, everything of attracting the top talent and retaining them is part of talent management. And there's a complete life cycle. Starts from sourcing and recruiting, then hiring and onboarding, performance management, जैसे मैंने आपको बोला, professional development, retention of that person, and then succession planning, that who will occupy the roles once Rahul leaves, and filling the leadership role so that we have enough pipeline. So succession planning, in short, is a business strategy for passing leadership roles on to one or more than other employees, so that we don't have no people when somebody leaves. So we need to have that whole plan key who will take care of the leadership responsibilities and identify the leaders already. So identify the key positions, pinpoint what are the skills of the role, skill assessments, right? Assess the staff that is currently present, create a transfer plan, train the employees currently, implement, evaluate, and adjust. So this is all how we prepare employees for internal promotions. This is all succession planning. Point आता है well-being, employee well-being. Again, my favorite part. Making sure that suppose Rahul is having mental health issues in the organization. He's going through a tough time. He wants to be physically fit, physical issues, physical well-being, mental well-being, financial well-being, emotional well-being, social well-being, all the well-being overall. Rahul should feel nice, only then he'll be able to perform. The total well-being of the employee is taken care, is again taken by HR team, and HR does the employee well-being as well. उसके अंदर mental health awareness sessions, वहाँ पे talks हो सकते हैं, visitor guest lectures हो सकते हैं, making sure we have right counselors in the organization. Counseling sessions are given to employees for free of cost. There is EAP in the organization, employee assistance programs are there, in-house counselors, there are sessions on yoga, mental health, food, nutrition, sleep. All that is forms the well-being of a person, that is taken care by HRs again. Finally, now Rahul is 2.53 years in the organization, and Rahul wants to quit. Now Rahul is searching for better opportunities outside, and now he has resigned. Now HR will also do the exit discussion. They'll connect with Rahul कि यार क्या problem है, क्या आपको क्यों, what are the reasons for your resignation, how much hike you are getting outside. So HR will decide कि
they will counter offer depending on the criticality of the role. They'll discuss with the manager, they'll share the summary of the discussion with the business team and check if there is retention possibility. They'll check if they can offer bonus to Rahul, counter offers, so that the making sure that top talent and critical talent is retained in the organization. Again, this taken care by HR. Apart from this, there are more other things which I have not covered, which comes under COE, Center of Excellence. So there are two things: HR generalist versus HR specialist. Okay, HR generalist is actually HR business partner, so they'll do everything. HR business partner will do all the things. HR specialist will do certain special things like HR analytics. So there is a HR analytics function. They will, because HR has a lot of data about employees, they will do the attrition analysis, they will do compensation analysis, all the data analysis on the data, vast data that we have, take the important decisions basis that, present it to the business, take right decisions through the HR analytics. So there is a HR analytics function. Talent analytics बोल सकते हो. There is compensation and benefits, again a specialized domain. There is total rewards मतलब rewards and recognition. So again, one of the important thing is Rahul should feel recognized in the organization, right? So employee engagement के अंदर एक rewards and recognition का भी आता है कि there Rahul should feel he's getting the awards for his performance, so that if you are not feeling recognized, Rahul feels कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ पर nobody is recognizing me, right? So that is taken care by the total rewards team. So there are timely, shout outs given by the managers, good work done. There are monetary awards, non-monetary benefits. कुछ काम किया राहुल ने, he make sure that he gets awarded, so that वो LinkedIn पे जाके चिपकाएगा कि मुझे ये award मिला, अच्छा लग रहा है. So making sure all that again taken care by the HR team. Total rewards, change management team, learning and development team. These are again specialist teams. Change management is again one of the major role. कुछ मेजर चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही पूरा हिल गया है, अभी क्या क्या अफेक्ट हो सकता है वो पूरा चेंज मैनेज करना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर HR, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज. I will go deeper in the HR roles in the next video. Today I covered mostly through the Rahul's employee life cycle, what he goes through and how HR plays a role. Please subscribe right now, don't miss subscribing, hit on all notifications and प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, सो दैट अदर पीपल ऑल्सो नो कि HR करता क्या है. को ऐसा देखना पड़ेगा कि अगर HR ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो क्या भसड़ हो सकती है, क्या क्या राहुल हो सकता है. राहुल ने ज्वाइन नहीं किया, राहुल को पता कैसे चलेगा ऑर्गेनाइजेशन कैसी अगर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग नहीं होगा. राहुल को सिलेक्शन कैसे होगा, कौन इंटरव्यू लेगा, कौन ऑफर देगा, ऑफर लेटर अगर HR नहीं होगा, कौन उसका ऑनबोर्डिंग करेगा, कौन उसको कल्चरल असिमिलेशन, बड़ी मैपिंग कौन करवाएगा, कौन उसके क्वेरीज रिजॉल्व करेगा, कौन उसको एम्प्लॉय में ऑर्गेनाइजेशन में एंगेज रखेगा, कौन एक्टिविटीज़ डिसाइड करेगा, कौन उसके लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन उसका परफॉर्मेंस मैनेज करेगा, कौन उसको रेटिंग देगा, कौन उसको उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करेगा, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैंडल करेगा, मेकिंग श्योर ही गेट्स ड्यू जस्टिस एंड ऑल एवरीथिंग, ग्रीवांसेस आर done, handle the conflict resolution, who will handle the promotion, who will handle the talent management, making sure that Rahul is differentiated if he's a top talent, who will handle the complete well-being, employee well-being of Rahul. So all these functions are taken care by HR. There is a lot of rewarding things that HR does. Most people think HR is a thankless job. I don't think so. HR is a thankful job if HR does the right thing. There are a lot of things to add value to an employee's life, making it better for life. So at the end, what I'll say is, what an HR does is, HR makes workplaces better for human beings and human beings better at their work. Okay, so HR makes workplaces better for their humans by making sure they are enabled well, they are getting right environment, opportunities, learning, growth, and make sure that humans are better at their work through their learning, development, etc. So ये complete चीज़ HR करता है through the whole touching the whole employee life cycle. So next video will dive deeper in the HR specific roles. I hope you like this video. Please share it. It means a lot if you like this video. Please comment if you have any more questions. I will surely answer them. And please subscribe to the channel. I'll be grateful to you. See you in the next video. Till then, stay all sorted.